Namaskar and a very warm welcome to all of you. Today we are going to start a series on the new textbooks of NCERT. It gives me immense pleasure to inform that uh, after the NEP 2020 and the National Curriculum Framework for Foundational Years, NCERT has come up with the learning teaching material that is Jadwi Pitara and the new textbooks for grades 1 and 2. I'm joined with my colleagues here. I'm joined with Professor Vardna M. Nikalche. She'll be talking about the English textbook Mridang. I'm joined by Professor Chaman Ara Khan. She'll be talking about the Urdu textbook Shehnai. I'm joined by Dr. Neelkant Kumar, who will be talking about the Hindi textbook Sarangi. And I'm also joined by Nisha Negi, who will be talking about the mathematics textbook. A very warm welcome to all of you and to my colleagues here in the studio. So I just want to take this opportunity to welcome the DM school teachers and the teachers of Kendriya Vidyalayas and the headmistresses of the foundational years and other stakeholders who have joined in today's session. Just want to tell you that this program is being telecast in channel 1 and 2 p.m. eVidya, and it is being live telecast in NCRT Events YouTube channel. So those who are not able to join through the Google platform can join through these platforms with us. So just to give you a brief, that the Jadui Pitara has lot of toys and learning teaching material. Uh, it also has a trainer's handbook called Unmukh and a workbook, activity book for children called Anand. And all the material which is under publication is now available for sale in NCERT, and very soon we'll also be making the Jadui Pitara available. So I would now invite my colleague, Professor Vardha Nikalji, to talk about the English textbook Mridang for classes 1 and 2. Namaste and good morning to one and all. As Professor Suniti Sanwal has already mentioned, we congratulate ourselves and you all for now we have the new textbooks with us. I'll be talking about the textbooks in English. I will be sharing a PPT with you for English, and these books are titled Mridang. As you can see on the screen, these are the textbooks, English textbooks for classes 1 and 2, and the picture, as you can see, illustrates Mridang. Next, please. So the salient features of these English textbooks. So what is new, you may ask? After all, the non-negotiables are always there. There are, and there will continue to be 26 letters in the English alphabet. There will be poems, there will be stories. So what is new? In this, as in the previous textbook, we have tried to combine the workbook, the exercises that the teacher is expected to do in the textbook. That is, there is no need to have a separate workbook unless, of course, the school or the teachers deem it necessary. There is more focus on speaking and listening because, as you know, English is L2, and in our country, there are varying degrees of exposure to children. The learners in your classes, they come from different linguistic backgrounds with varying exposures to English. Their parents may be literate, perhaps only in the regional language. They may be illiterate, but yes, the aspirations of every parent is that his or her child should be able to speak simple but correct English. Gradual progression towards reading and writing, these will be illustrated in the slides to come. There is in this textbook more scope for the learner's participation. That is, the learner will be expected to write in the textbook because, as I already said, it's like a workbook. They will be writing fill in the blanks, they will be drawing, they will be scribbling, and so on. So there are also detailed notes for the teachers at the end of every page or every 2 pages to ensure that
every teacher, no matter whether a novice or a professional, would use these notes and use them to help her to teach according to the new approach as enunciated in the NEP 2020 and in the NCERT. The content is presented in different formats: comic strip, poem, rhyme, and narrative. There are drawings which are incomplete. There are folk tales. In fact, there's a lot of these content in varied contexts. Engaging illustrations in these textbooks provide support not only to the narrative, they also give a lot of scope for encouraging speaking skills. There is space and scope for multilingualism, which we can see later on. Grammar is very much integrated in the content. And there is the inclusion of the Indian knowledge in the various cultures and regions. Next, please. The four blocks which are there in the NCFFS: oral language development, word recognition, reading and writing. And as you can see, each of these has 4 terms. All these are covered in the new textbooks. There is also a note to the teacher in these textbooks which come immediately after the foreword, which will also help you to see the reflection of these 4 blocks in the NCF, in the new textbooks. Thank you. And in the slide, these are the themes that we have covered. In class 1, my family and me, life around us, food and seasons. In class 2, the theme continues, my family and me. Welcome to my world is again a takeoff from life around us. We have 3 new themes here: going places related to travel, life around us, and harmony, which talks about the unity in our beautiful country. Next, please. The different kinds or aspects that we have covered in these new textbooks: let us sing or let us write. In class 1, we have let us sing and then let us write. We have let us listen, because listening is a very neglected skill in our in the generally seen in the school scenario. Let us speak, let us read, let us draw, and let us write. Let us do, where the child actually manipulates things, touches objects, and tears paper, uses it to make a collage, and so on and so forth. Of course, under the supervision of the teacher. Next. Here are some examples, some pages, some illustrations from the new textbooks. One is the phonic song. In the preschool, they would have learned the ABC song. That also is here in the textbook. In addition, we have the phonic song, which talks about the different sounds that of the English alphabet, making it a fun activity for the children to learn, to hear, and to recite. The greetings here not only talk about good morning, good afternoon, good evening, and good night, which are there in English. We also have, as you can see, predominantly shown the Indian term, the Indian greeting of Namaste. This is because Namaste is only one which can be used throughout the day, whereas in English it is there are 3 or 4 different ones depending on the time of day. So the children will be exposed to not only the fact that there can be different kinds of greeting, but also that there are the Indian ways, and the note to the teacher says that vanakkam or namaste, namaskar, all these can be used in the classroom as an activity. Next. So fun with numbers. This addresses the cross-curricular areas. Fun with numbers, we are teaching them 1, 2, 3, 4, 5, but we are also teaching them the English way of pronunciation, and also we are talking about values. As you can see, the child has caught a fish, and 6, 7, 8, 9, 10, the child has let it go again, which means that there is an emphasis on peaceful coexistence. Next. So 5 little monkeys, this is again on numerals, on mathematics, but yes, we are teaching backward counting. Also,
Through these repetitive phrases, the child will be able to gain more confidence in English, especially if it is a group recitation, and the fact that they can jump, motor development and gross motor development, fine motor skills, all these are taken care of. This is another fun activity for children to do. Count the elephants. Can you see the elephants? So this one is from Firki Bachon Ki, a magazine brought out by NCERT. You can have a look at that if you're interested. Here you can see there's one elephant. Then another child will say, look, there are more elephants there. Another elephant put up, as a picture on the wall. There are elephants on the cloth and so on. So they'll begin to count the elephants, small, big. They'll begin to describe the elephants, and in the process, they will begin to learn language because they are interested in doing so. And here is the value of sharing. We have midday meals, we have schools where children bring their own tiffin, whatever it is, they are sharing it. The teacher also has fruit, which she is encouraging the children to share. She is, of course, cutting it herself. From fruit, we move on to vegetables, where we are now talking about grammatical structures without emphasizing that it is grammar. So are these onions? Yes, they are. These are onions. Are these tomatoes? No, they are not. So yes, they are. No, they are not. These are taught to the child. Of course, here we have vegetables. The teacher is free to use any object, different objects. Yes, these need constant and regular practice. So the next one is labeling the parts of the bicycle. In the Jadui Pitara that Professor Suniti Sanwal has also mentioned, we have what is called complete the picture. In that there is a picture with a crucial part element missing. And there we had in Jadui Pitara a card which has a bicycle and the chain is missing. And here we are asking the children to write the different label the parts of the bicycle. Of course, it's taken off from a poem. It's an exercise that follows a poem, which talks about the different parts of the bicycle. And here we have two young children playing bat and ball. The unusual feature of this is that this story is found in the Hindi as well as in the Urdu textbooks. So children can move back and forth. You as a teacher can move back and forth from the other textbooks to the English one and ensure that, the children would have understood the story in the other tongue and in the mother tongue, and now they'll come to know the story in the other tongue. This again, a fun activity which develops the fine motor skills about Rangoli, which is a feature common and which can be seen throughout the nation. A simple 4x4 kind of set is given there, and the children are asked to draw this. You may ask, how can this help in English? This helps because it encourages speaking skills. The child will be listening to the teacher. The child also has cognitive development. The child can make out what is to be done, and even an arrangement teacher can make use of such diagrams. So last but not least, we have tried to include in all these themes the beautiful and wondrous diversity that is in our nation through multilingualism and multiculturalism. But we end with a message that we are all Indians and we are all one. Thank you so much. Thank you, Professor Varda, for a very crisp presentation. So you saw that all the recommendations of NCFFS about the language teaching has been incorporated, and also the holistic development of children is assured through these textbooks. So thank you so much for a very nice presentation. And those who are joined through the YouTube channel or through the Google Meet can write their questions to us, and we will try and answer that. So in this series, we move on to the Hindi textbooks, and we want to see what is new in the Hindi textbook this time. So Dr. Neelkant will be talking about the Hindi textbook, Sarangi 1 and 2. सभी को नमस्कार। सूर्य के अनुसार सजी हुई किताबों की श्रृंखला में मैं आप लोगों के समक्ष सारंगी भाग 1 और सारंगी भाग 2 के बारे में बात
जितनी भी किताबें हैं, जैसा कि सुनीति मैडम ने आप लोगों से बातचीत के दौरान कहा, ये सारी किताबें हमारे एनईपी, एनसीएफएस और पाठ्यक्रम को ध्यान में रखते हुए ही तैयार किया गया है। और सारंगी, जो कि हिंदी प्रथम भाषा की किताब है, उसको भी इन्हीं मूल्यों और इन्हीं चिंतन को ध्यान में रखते हुए तैयार किया गया है। आप जब किताब को देखेंगे और उससे गुजरेंगे तो आपको ये अवश्य पता लगेगा कि बिल्कुल क्रमिक ढंग से बच्चे जिस प्रकार से सीखते हैं वैसे ही वे पाठ व्यवस्थित किए गए हैं, वैसे ही उनको अक्षर, शब्द, चित्र, सारी चीजें दी गई हैं। और कोशिश ये की है कि ये रंगीन हो, आनंदमयी हो और खेल खेल में हो। तो अब मैं आप सबके समक्ष एक प्रेजेंटेशन रखता हूँ, पीपीटी, जो आप चला दें। तो सारंगी भाग 1 और भाग 2 को आप देख सकते हैं अपने स्क्रीन पर। ये दोनों किताबें आपके समक्ष हैं। आप ऑनलाइन भी इसको देख सकते हैं और आपके लिए मौजूद भी है। अगले पीपीटी पर हम चलते हैं। सारंगी भाग 1 और 2 को तैयार करते हुए जिन मुख्य बिंदुओं को ध्यान में रखा गया है और इनकी जो मुख्य विशेषताएं हैं वो आप सबके समक्ष हैं। यह किताब हिंदी भाषा सीखने के रुचिपूर्ण अवसर देने वाली किताब है, जिसकी बात हो गई है कि रुचिपूर्ण किताबें चित्र से भरी हुई हैं, रंगीन चित्रों से, गतिविधियों से, खेल गीत से, कहानियों से और बच्चों की जिज्ञासा, कल्पना आदि को अवसर देने के विभिन्न भाषा के चारों कौशलों, जो कि हर हिंदी की किताब में ये कौशल शामिल होते ही हैं, सुनना, बोलना, पढ़ना और लिखना, इन पर विशेष बल दिया गया है। और जो भी गतिविधि, अभ्यास कार्य, पाठ दिए गए हैं, जो भी टेक्सचुअल मटेरियल हैं, ये इन सभी कौशलों को विकसित करने के लिए ही वहां पर है। बच्चों के अनुभवों और भागीदारिता को बढ़ावा देना, निश्चित रूप से हमने ये प्रयास किया है कि चूंकि सीखना बच्चों को है तो उनके अनुभव और उनकी भागीदारिता को हम रखें, ताकि खुद ही संघर्ष कर, खुद ही इंटरेक्ट कर वो ज्ञान का सृजन करें। शिक्षकों के लिए प्रस्तावित शिक्षण निर्देश भी हैं। चूंकि ये किताबें प्रारंभिक रूप से, खासकर कक्षा 1 की किताब, टीचर अपने दिशा निर्देश में ही बच्चों तक पहुंचाएंगे, इसलिए आवश्यक है कि हम पढ़ने पढ़ाने के दौरान, क्लासरूम टीचिंग के दौरान शिक्षकों के लिए कुछ निर्देश दें कि जिस उद्देश्य से इस पाठ को लगाया गया है उस उद्देश्य को ध्यान में रखते हुए वो बच्चों के साथ उसको लेकर आगे बढ़ें। भाषा की विभिन्न विधाओं, जैसे कि गद्य, पद्य आप देखते हैं, कहानी, कविता, खेल गीत, पहेलियां, इन सब का समावेश यहाँ पर किया गया है। तो बच्चों की जिंदगी का जुड़ाव जिस तरह की विधाओं से है, उन्हीं विधाओं को यहाँ क्रमवार ढंग से लिया गया है। भाषाई कुशलताओं एवं रचनात्मकता और कल्पनाशीलता को बढ़ावा देने वाले चित्र आपको यहाँ पर मिलेंगे। चित्र बच्चों के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होते हैं। कोई भी किताब जब वो अपने हाथ में लेते हैं तो सबसे पहले वो चित्रों को देखकर ही जुड़ते हैं और प्रसन्न होते हैं। तो किताब में प्रवेश करने के लिए चित्रों का सुंदर होना बहुत ही आवश्यक है और बच्चों के अनुभवों को अवसर देने वाला भी होना चाहिए। तो ऐसे ही चित्र आपको इन किताबों में मिलेंगे। अंतर विषयात्मकता के अवसर, मतलब इंटरडिसिप्लिनरी अप्रोच आपको इन किताबों में भी दिखाई पड़ेगा। जैसे नटखट दिवाकर एक अध्याय है, आप उसको देखेंगे तो कहने को तो ये कहानी की तरह है, लेकिन आप जैसे इसमें आगे बढ़ेंगे तो आपको यहाँ पर जोड़, घटाव, गुना, इन सारी चीजों का प्राथमिक स्तर पर एहसास होता चलेगा और बच्चे उसमें जोड़ घटाव भी अप्रत्यक्ष तरीके से सीख सकते हैं। दिवाकर जब अंत में कहता है कि देखिए 2 बज गए और फिर 3 बज गया, 2 और 3 मिलकर हो जाते हैं 5, और वो दादाजी प्रसन्न होकर उसे कहते हैं ठीक है। तो ये इस तरह के अवसर भी वहां पर बच्चों को दिए गए हैं कि वो हिंदी की किताबों में गणित भी सीखें, पर्यावरण भी सीखें, कला के साथ भी इसको जोड़ा गया है और अलग अलग जैसे कि जेंडर संवेदनशीलता को ध्यान में रखा गया है, अगल बगल के परिवेश को जोड़कर
उनके ज्ञान को आगे बढ़ाने की कोशिश की गया है। और एक और महत्वपूर्ण बात जो इन किताबों में आपको दिखाई पड़ेगी, हर विषय की किताब में, कि भारतीय संस्कृति और ज्ञान परंपरा पर बल दिया गया है। हमारे हजारों वर्ष की सीखने की परंपरा रही है। गणित हम सीखते रहे हैं गा गा कर और अलग अलग तरीके से जोड़कर। तो इन किताबों को बनाते हुए हमारी जो परंपरा संस्कृति है वो टेक्सचुअल मटेरियल से लेकर, चित्र से लेकर कर सीखने सिखाने की प्रक्रिया तक में हमने इनका ध्यान रखा है, जो आपको दिखाई पड़ेगा आगे। लोक जीवन और लोक कलाओं को निश्चित रूप से शामिल किया ही गया है, और सामाजिक सरोकार, जितने भी सामाजिक सरोकार हैं जो कि एक अच्छे नागरिक के रूप में प्रारंभ से ही सीखना चाहिए, चाहे वो नैतिक मूल्य हो, चाहे बच्चों को ईमानदारी, सत्यनिष्ठा, इस तरह की चीजों से जोड़ना हो, वो प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष तरीके से आपको इन किताबों में दिखाई पड़ेगा। ये किताबें थीम आधारित तैयार की गई हैं। मुख्य रूप से कक्षा 1 में और कक्षा 2 में, दोनों में आप देखेंगे 5-5 थीम को लिया गया है, और इन थीम, इन विषय वस्तु, इन संदर्भ के अनुसार ही कविता, कहानियां, पहेलियां, खेल गीत, चित्र, अभ्यास कार्य आदि लिए गए हैं, और उन्हीं के आधार पर तमाम तरह की दक्षताओं को, सीखने के प्रतिफल को बच्चों तक पहुंचाने की कोशिश की गई है। तो आप देख सकते हैं अपने स्क्रीन पर कि सारंगी भाग 1 में मुख्य रूप से 5 संदर्भों, विषय वस्तुओं को लिया गया है, जो है परिवार, जीव जगत, हमारा खान पान, त्योहार और मेले, हरी भरी दुनिया। अब सारंगी कक्षा 2 पर आप आए तो वहां पर भी आपको 5 इकाइयां दिखाई पड़ रही हैं। यहाँ पर भी परिवार है, और कक्षा 1 में परिवार चूंकि एक महत्वपूर्ण इकाई है, और परिवार के माध्यम से ही सारे मूल्य और आप कहें कि स्कूलिंग का एक तरह से अनौपचारिक प्रारंभ वहीं से होता है, वहीं से बच्चे सीखना प्रारंभ करते हैं। इसलिए वो महत्वपूर्ण अंश है हमारे लिए, सीखने सिखाने के लिए भी, और एक नागरिक, संतुलित नागरिक के रूप में बच्चों के विकास के लिए भी। तो परिवार को हमने दोनों कक्षाओं में रखा है। और एक हरी भरी धरती जिसकी आवश्यकता है अभी, जिस तरह से पर्यावरण को आप देख रहे हैं कि खिलवाड़ हो रहा है और हमारे जीने के लिए कितना महत्वपूर्ण है, तो बच्चों में वो संवेदनशीलता पैदा करने के लिए हमने पर्यावरण, हरी भरी धरती को भी कक्षा 2 में रखा है। तो अब इसमें 5 हैं: परिवार, रंग ही रंग, हरी भरी धरती, मित्रता, आकाश। रंग भी बच्चों के जीवन के लिए बहुत महत्वपूर्ण है, और रंग ना हो तो उनकी खुशियां कैसे आएंगी, तो इसलिए रंग को भी महत्वपूर्ण थीम के रूप में रखा गया है। इन सारे थीम को आप देखेंगे, ध्यान में रखते हुए हमने कौशलों को विकसित करने का प्रयास किया है। अगले इस पर जब पीपी आप जाएंगे तो आप देखेंगे कि यहाँ पर हमने जो किताब को बनाने के लिए 4 ब्लॉक अप्रोच और बैलेंस लिटरेसी अप्रोच को ध्यान में रखते हुए तैयार किया है, वो दिखाई पड़ेगा कि वो 4 कौन कौन से स्तंभ हैं जिनको ध्यान में रखकर सारी पूरी किताब तैयार की गई है। पहला मौखिक भाषा का विकास है, दूसरा शब्द पहचान है, तीसरा पढ़ना, और चौथा लिखना। इन चारों स्तंभों को मुख्य रूप से ध्यान में रखकर ही इन किताबों की निर्मित की गई है। अब मौखिक भाषा के विकास के लिए आप देखेंगे किताब को प्रारंभ से ही, तो आपको कई तरह के हिस्से दिखाई पड़ेंगे जहां पर इन मौखिक अवधारणा को विकसित करने के लिए बच्चों के टेक्सचुअल मटेरियल पर बल दिया गया है। पहली तो जो चित्र है, कहानियां हैं, कविताएं हैं, इन सब में मौखिक हिस्सा है, लेकिन चित्र और बातचीत का एक अलग से अंश दिया गया होगा, आप देखेंगे हर किताब में, हर यूनिट में, हर इकाई में वो मौजूद है। उस पर आप बच्चों से बातचीत कर सकते हैं एक शिक्षक के रूप में, और उनको तमाम तरह के अवसर दे सकते हैं कि वो अपनी मातृभाषा में अपने आप को अभिव्यक्त करें, उनकी जिज्ञासा और कल्पना को भी अवसर दें। तो एक तरह से बहुभाषिकता का अवसर भी है, और मौखिक भाषा के विकास के अवसर भी वहां पर मौजूद है। आप मौखिक शब्दावलियों को लेकर या अनेक गतिविधियों को लेकर भी आगे बढ़ सकते हैं, जहां पर बच्चों को बातचीत के तमाम अवसर मौजूद हैं।
कहानियों को भी बीच में रोक कर अपनी बात कहने के लिए कई गतिविधियां दी गई हैं, जिसके माध्यम से मौखिक भाषा का विकास किया जा सकता है। अब अगले पर आप आए, जो शब्द पहचान का हिस्सा हमारा है, जो एक महत्वपूर्ण हिस्सा है और आप लोगों के लिए एक तरह से नई बात भी होगी, जो जिसको नए तरीके से पाठ्य पुस्तक में एकीकृत किया गया है, इंटीग्रेट किया गया है। प्रिंट जागरूकता इसमें शामिल है, ध्वनि जागरूकता इसमें शामिल है, प्रतीकों और ध्वनि का संबंध इसमें शामिल है, लिखित शब्द को पहचानना, शब्दों को लिखना। आप देखें कि बगल में एक उदाहरण की तरह दिया गया है, कुछ चित्र दिए गए हैं और बच्चों से कहा गया है कि सही का निशान लगाइए। तो ये भी कहा गया है बच्चों से कि पहली ध्वनि कौन सी है। आप इसमें जिन शब्दों की पहली ध्वनि अ है, उसको देखकर सही का निशान लगाइए, अनुमान लगाइए। तो वो अवसर बच्चों को दिए गए हैं कि वो चित्र को देखकर शब्द से जोड़ें, ध्वनि से जोड़ें और प्रतीक की तरह उसको सीखें। तो ऐसे लिखित शब्दों को पहचानना और आगे चलकर लिखने की प्रवृत्ति भी धीरे धीरे इसके माध्यम से विकसित करने की बात की गई है। अगले हम अंश पर चलें तो आप वहां देखेंगे कि पढ़ने की बात की गई है 4 स्तंभों में, जो एक महत्वपूर्ण हिस्सा है। और इसमें लिखित सामग्री से अर्थ का निर्माण करना और आलोचनात्मक समीक्षात्मक ढंग से चिंतन करना, मतलब एक तरह से समझ कर अपनी किसी बात को सामने रखना। और इसके लिए आप देखेंगे कि पाठ्य पुस्तकों में तो तरह तरह की चीजें दी गई हैं, लेकिन हर कक्षा 1 और 2 में कुछ अंश दिए गए हैं जहां पर बच्चे अनुमान लगाकर भी पढ़ सकते हैं, और जब वो पढ़ना सीख जाएं तो वो उन शब्दों को बोलकर भी पढ़ सकते हैं। तो पढ़ने संबंधी कई हिस्से वहां पर दिए गए हैं। इसी तरह से लिखने के लिए भी चाहे अक्षर हो चाहे शब्द हो, तमाम तरह की गतिविधियां वहां पर की गई हैं। अब हमारी पाठ्य पुस्तक में सारंगी भाग 1 और 2 में जिन कौशलों और दक्षताओं और सीखने के प्रतिफल को कवर किया गया है, जो वहां मौजूद हैं, उसकी चर्चा आप अपने स्क्रीन पर देख सकते हैं। जहां पर पाठचर्या लक्ष्य 9 की चर्चा है, 9.1 में जो दक्षताएं हैं उसकी, और उससे जुड़े हुए जो सीखने के प्रतिफल हैं कि बच्चे 2 भाषाओं में दैनिक जीवन के लिए प्रभावी संप्रेषण की कुशलता विकसित करते हैं। सरल गीतों, दक्षता के रूप में आप देखेंगे कि सरल गीतों, तुकबंदी और कविताओं को सुनते हैं और उनकी सराहना करते हैं। और सीखने के प्रतिफल के रूप में आप उससे जो जुड़ी हुई चीजें हैं कि लंबे 4 से 8 वाक्यों वाले गीत, कविताओं को ध्यान से सुनते हैं और उनके बारे में बातचीत करते हैं। दूसरा है कि छोटे 10 पंक्तियों वाले गीत, कविताओं को गाते हैं, पाठ करते हैं। तो इसके अवसर आपको इन पाठ्य पुस्तकों में स्पष्ट रूप से दिख जाएंगे। इसी तरह से पाठचर्या लक्ष्य 10 है, उससे जुड़ी हुई दक्षताएं हैं और सीखने के प्रतिफल हैं। फिर दक्षता 10.9 है, उससे जुड़ी हुई सीखने के प्रतिफल आपको दिखाई पड़ जाएंगे। अब इन दक्षताओं को अभिव्यक्त करने वाले जो उदाहरण हैं, जो कि चित्र और कविता के रूप में, मौखिक भाषा की अगर हम बात करें तो वहां मौजूद है, बातचीत करने के रूप में वहां पर मौजूद है, हम आनंदमयी कुछ बनाएं उसमें भी वो मौजूद है, खेल खेल में जो बच्चे कम्युनिकेट करते हैं, एक दूसरे से बात करते हैं, वो भी वहां पर मौजूद है। और खोजें और जाने में भी ये अवसर मौखिक भाषा के विकास को आपको दिखाई पड़ेंगे। शब्दों को पहचानना एवं गढ़ना, इसके लिए भी तमाम अवसर दिए गए हैं। शब्दों का खेल आपको इन पाठ्य पुस्तकों में दिखाई पड़ेगा। ध्वनि की आकृति एवं उनकी मात्राओं की पहचान करना के रूप में दिखाई पड़ेगा। शब्दों का दूसरा साथी खोजना, लिखना, पढ़ना, ये पहेलियां भी आपको वहां पर दिखाई पड़ेंगी। पहली, दूसरी, तीसरी, अंतिम ध्वनि के अभ्यास के रूप में भी कई गतिविधियां हैं जो आपको वहां पर दिखाई पड़ेंगी। साथ ही अनुस्वार, चंद्र बिंदु वाले शब्दों को भी सम्मिलित कर या छात्रा, ज्ञा और स्र पर भी किस तरीके से उन को हम बच्चों तक पहुंचाएं, वो भी इन किताबों में अभ्यास कार्य के माध्यम से आपके समक्ष होगा। पढ़ने के लिए भी आपने देख ही लिया, सुने कहानी, मिलकर पढ़िए, आनंदमयी कविता, और बच्चों के साथ जो मिलकर पढ़ने वाली बात है। और कई गतिविधियां ऐसी दी गई हैं
जहां पर बच्चे को पढ़ने का अवसर दिया गया है अनुमान लगाकर, तो वो आपको वहां पर अवश्य दिखाई पड़ेगा। लिखने के लिए आप अगले इसमें देख सकते हैं कि कैसे बच्चे अपने लिखने की शुरुआत चित्रों के माध्यम से करते हैं और चित्रों के माध्यम से कैसे फिर अक्षरों, शब्दों और आगे तक जाते हैं। इसके तमाम अवसर इन पाठ्य पुस्तकों में अभ्यास कार्य के रूप में भी दिए गए हैं और अलग अलग अवसरों पर भी दिए गए हैं। बातचीत के अंश के बारे में हमारी बातचीत हो चुकी है कि कई अवसर बातचीत के लिए मौजूद हैं, मातृभाषा से लेकर और जिस भाषा को हम सिखाना चाहते हैं, मदर टंग से अदर टंग की यात्रा के लिए तमाम अवसर आपको यहाँ पर दिखाई पड़ेंगे। तो ये कुल मिलाकर हमारी किताब में चर्चा है। अब कुछ उदाहरण मिलकर पढ़िए के दिए गए हैं, जिन बातों की चर्चा अभी मैं आपसे कर रहा था। तो भुट्टे के माध्यम से कैसे मिलकर पढ़िए संबंधी गतिविधियां दी गई हैं और वो पाठ दिया गया है, उसका एक उदाहरण आप अपने स्क्रीन पर देख सकते हैं। इस हिस्से में उन कहानियों का चुनाव किया गया है जिनमें दोहराव है वाक्यों के स्तर पर, ताकि बच्चों को वो सीखने में सहूलियत हो। दोहराव से आप सब जानते हैं कि बच्चों को थोड़ा आनंद आता है, एक ही बात को वो बार बार बोलते हैं तो सीखते भी हैं और आनंद के साथ सीखने की। इसी तरह खोजें और जाने का अंश है, आप देखिए वो उदाहरण भी अभ्यास कार्य में आपके समक्ष है, तो उसको भी आप इससे जोड़कर जान और समझ सकते हैं। आओ कुछ बनाएं। अगले आप स्लाइड पर जाएं तो देखेंगे चित्रकारी और लेखन। खेल खेल में जिन कौशलों की मैं आप लोगों से चर्चा कर रहा हूं वो भी मौजूद है। कई तरह के खेल दिए गए हैं, कई तरह के साथ, चाहे वो सांप सीढ़ी जैसे हो, चाहे बच्चे को अपने या किसी जानवर को उनके या किसी पक्षी को उनके डेस्टिनेशन तक पहुंचाने के, लक्ष्य तक पहुंचाने की बात हो, इस तरह की तमाम खेल बच्चों के समक्ष रखे गए हैं और इन खेलों के माध्यम से ही उनको अलग तरह के कौशलों को सिखाने की बात की गई है। तो कुल मिलाकर ये दोनों किताबें क्रमिक रूप से विकसित हुई हैं, अक्षरों से लेकर शब्दों से लेकर वाक्य तक, पढ़ने तक, और जिन कौशलों की चर्चा की गई है उन तमाम कौशलों को ध्यान में ये रखा गया है कि ये सब गतिविधियां बिल्कुल रोचक ढंग से हों और बच्चे सहजता से, प्राकृतिक रूप से इनको सीखें। तो आप इन पाठ्य पुस्तकों का इस्तेमाल करें और इन मुख्य बिंदुओं को ध्यान में रखते हुए और अपने विचार मिलाकर अपने विद्यार्थियों तक उसको पहुंचाएं। हमारी शुभकामनाएं सारंगी भाग 1 और सारंगी भाग 2 के लिए। धन्यवाद नीलकंठ जी। ये आपने बताया कि जो हिंदी की पाठ्य पुस्तकें हैं, ना केवल दक्षताएं जो दी गई हैं 4 ब्लॉक अप्रोच में, पर जो प्ले बेस्ड, एक्टिविटी बेस्ड, ओरल लैंग्वेज डेवलपमेंट में फोकस करते हुए ये किताबें बनी हैं। हमारे पास 2 सवाल आए हैं ऑनलाइन माध्यम से कि ये किताबें कब अवेलेबल हो जाएंगी। तो मैं आपको सूचित करना चाहती हूँ कि ये किताबें अब अवेलेबल हैं और ये एनसीईआरटी की वेबसाइट से आप डाउनलोड कर सकते हैं और ये ईपब और फ्लिप बुक फॉर्मेट में भी, डिजिटल फॉर्मेट में भी एनसीईआरटी की वेबसाइट से उपलब्ध है। बाजार में भी उपलब्ध है, एनसीईआरटी हेडक्वार्टर्स के पब्लिकेशन डिवीजन में ये उपलब्ध है। तो ये किताबें ऑलरेडी मार्केट में उपलब्ध है। दूसरा प्रश्न जो हमें मिला है कि इन किताबों को कब से लागू करवाना है, तो इन किताबों को इसी सत्र से लागू होना है। कक्षा 1 और 2 के बच्चे इस सत्र में ये किताबें, इंग्लिश के लिए मृदंग, हिंदी के लिए सारंगी और गणित के लिए आनंदमयी गणित या जॉयफुल मैथमेटिक्स, ये किताबें इंग्लिश या हिंदी मीडियम में ये किताबें पढ़ेंगे। तो ये दोनों किताबें, ये सारी किताबें जो है वो इसी सत्र से 2023 से ये लागू होनी है। ये आप लोगों को मालूम है कि विद्या प्रवेश 3 महीने तक होना था सारे स्कूलों में, और अब ये किताबें उपलब्ध हैं जहाँ पे आप उसी का एक्सटेंशन, जो विद्या प्रवेश खेल खेल में सीखने की जो गतिविधियां थी, उसी का एक एक्सटेंशन है जो किताबों में भी आपको नजर आएगा। तो इसके साथ ही हम आपको लिए चलते हैं गणित की किताबों की तरफ, जहाँ पे जो निशा नेगी हमारे सीनियर कंसल्टेंट है, वो आपको बताएंगी कि गणित की किताबों में क्या नया है। निशा। Good morning, everyone. Warm welcome to you all. Today I will be talking about mathematics textbooks. The name of the mathematics textbook is Joyful Mathematics. As the name suggests, these textbooks are designed keeping the child's joy alive in the classroom.
So the textbook focuses on learning mathematics in a play way mode. So all the mathematical concepts will be learned through toy-based, play-based approach. As at this level, children enjoy free play. These textbooks are designed as per the recommendations of NEP 2020, and also it has been mapped with NCERT, keeping intact all the competencies and curricular goal mentioned in it. Uh, these textbooks have a lot of activities, games, learning experiences within and outside the classroom. It ensures development of sensitivity towards environment, positive values and habits, cultural rootedness, and inclusive perspective in children. If you see the illustration of these textbooks, you will see that they are specially designed where they are not only learning the mathematical concepts, but that will enhance their visual and reading comprehension of the children. Next slide. Mathematics textbooks are designed in a way where they are text cum workbook, which includes a lot of opportunities to draw, color, write, make things like toys from play, blocks, paper folding, cover and balance, lot of things, which will enhance their conceptual understanding of spatial understanding, numbers and other concepts. We have a special section where we have included puzzles, projects, let's do activity, which ensure thought-provoking tasks among the children. The textbook also includes teacher's note for extended knowledge and suggestive activities. The chapter need to be supplemented, although the textbook provided a lot of material which can be used in the classroom, where it has a lot of activities, worksheets and projects, but it is again has to be supplemented with audio video which will be provided, and there is a QR code given on each chapter which teachers can access, and it is also linked with Jadui Pitara, which is being developed by NCERT. The textbook is taking care of the multilingual perspective in the textbook, and all the activities try to focus on the development of language across. There are while answering the questions in the textbook, the approach is there is no one right answer. So we are encouraging here through these textbooks that children should get involved in the thinking process, where more than one answer could be right, and the teacher will help children to provide the perspective or the reasons for those different right answers. So there are puzzles which will be given at the end of the textbook, where children can enjoy solving those puzzles, and also these puzzles will not be used as assessing children. Will not stress on getting into the right answer, whether the children are able to solve it or not. The entire process of solving those puzzles will be more important here. Teachers have to understand the objective of each of these chapters and activities, that they are being aligned with the curricular goals and competencies which are given in the NCF, and it has to take care of the diverse need of the children. Teachers can develop their own activities and supplement the same with the local toys, games or toys created by them, and other material available in children's immediate environment to support the kind of mathematical understanding being shown in the textbook. So the teachers are free to adapt or adopt or modify activities as per the context, as per the pace of the children or the classroom expectation, just to ensure that the development and the competencies need to be taken care. It also focuses on the 4-block approach of mathematics, which is being highlighted in NCFS. The block 1 talks about the oral math talk. So the textbook has a lot of picture stories, lot of discussion based on different topics, where the picture stories are given, where children and the teachers have discussions with them orally, and it provides them an opportunity to have math talk. And
why these math talks are important, which inculcate the mathematical thinking among children. It provides them opportunity where children can share what is happening, what they are thinking in terms of mathematical processes. We have block 2, skill teaching, where in both the textbook we have provided lots of let's do activities to strengthen the skill teaching in the children, so that the concept of each mathematical concept get strengthened, where the child takes the onus of doing it themselves, and in consonance with their parents, with their peer, and with other people with them. Now, the block 3 also talks about skill practice. A lot of worksheets and skill focused practice activities are being provided in the textbooks itself. We also have projects as an extended learning in the textbook, so which ensure that children not only practices this, but they practices it in a very engaging environment, an interesting environment. So math doesn't get like a drill kind of an activity, but they enjoy that process. And the last block, which is being highlighted by NCF, is the math game. So a lot of board games in the textbook are included. There are a lot of activities or the games where they are doing the outdoor games. So we have ensured that a lot of activities and games are, opportunities for a lot of activities and games are provided for children in the textbook. The next slide, we have emphasized on the value dimension here, where the children are involving with their parents and guardians, and that is being reflected in our textbook. So with the help of their grandparents, parents, or elder siblings, they are doing a lot of tasks and activities. The assessment of the textbook is for assessment. We are assessing why we are assessing here. We are not assessing whether the child how the child is doing, but entire process, how that child will be enabled and strengthened further for understanding that mathematical concept. So a lot of opportunities in terms of worksheets, in terms of activities, in terms of games will be used for assessment. This sums up what exactly the mathematical textbook is highlighting on. So I congratulate all of you for having this mathematics textbook here, which is available for all of you to use in your classroom shortly. Thank you very much. Thank you, Nisha. So you saw that all the textbooks which have been developed take into account the interactive play-based approach. So it is up to the teachers to take the same approach in the classroom and change the pedagogy of the classrooms. So with that, I think we have another book, but we have received more questions through online. Two of the people are saying that the books are not available in Chhattisgarh and it is not available in Northeast states. So I would just like to inform you that these textbooks are now uploaded in the NCERT website. You can download from there till the books physically reach your places. So these books are digitally now available, which can be used by the stakeholders. And with that, we move to the last textbook, that is the Urdu textbook, Shehnai 1 and 2. And for that, I invite Professor Chamanara to talk about the Urdu textbooks. अभी आपने हिंदी, इंग्लिश और मैथमेटिक्स की किताबों के बारे में जो है जाना। उर्दू की जो किताब है वो शहनाई के नाम से है, दोनों किताबें। और इन दोनों किताबों में तमाम दोनों दर्जे किताबों में NCERT और NEP 2020 के तनाजुर को मलूज़ रखा गया है। और इसकी जो नुमाया खुसूसियात हैं, साइलेंट फीचर जो है वो यही है कि इसमें आसान, दिलचस्प और तवज्जो करने वाले अंदाज में सलाहियतों पे मबनी मवाद को पेश किया गया है। हमारी समाजी
और सकाफती रिवायत से वाबस्ता ये दोनों किताबें शमूलियत की हैं। और सबसे बड़ी चीज़ ये है कि इसमें बैलेंस लिटरेसी अप्रोच को अपनाया गया है। तो बैलेंस लिटरेसी अप्रोच जो है उर्दू में खासतौर पर पहली क्लास में, क्योंकि हमारे यहाँ जो बच्चे हैं वो बाल वाटिका 1, बाल वाटिका 2, बाल वाटिका 3 से भी पढ़ के आ सकते हैं। कुछ ऐसे भी हैं जो डायरेक्टली पहली क्लास में अपना एडमिशन लेंगे। तो दोनों के लिए हमने इसमें इस तरह की एक्टिविटीज दी है ताकि वो बच्चे भी इसमें पढ़ सकें। तीसरी चीज इसमें जो हमारी चारों महारतें हैं, सुनना, बोलना, पढ़ना, लिखना, इन सबको रखा गया है। और उसके तहत जो है एक्सरसाइजेज बनाई गई हैं, मशकें बनाई गई हैं। पहले जबानी लफ्ज शनासी पर है, पहले हरफों को जो है जोड़ना, लिखना और बोलना जो है इस तरह से सिखाया गया है। इसी तरह से पहली बार इन किताबों में आर्ट को जोड़ा गया है, किताबों में आर्ट को जोड़ा गया है। और इससे पहले की जो किताबें थी उसमें की जो अप्रोच थी वो अलग थी, और ये अप्रोच जो है किताबों की अप्रोच वो अलग है। और इसके अलावा इनमें इन किताबों में बच्चों में खुद उनकी जो महारतें हैं, सुनना, जो भी महारतें हैं उनमें जो उनके जो तसव्वुर हैं, जो कॉन्सेप्ट है, उनको समझने के लिए एक फहम जो है ये किताबें पेश करती हैं। यानी कोई अगर वो जो है कोई अहम तसव्वुर है, जैसे खानदान है, घर है, आपके त्योहार हैं, या फिर हमारा माहौल है, तो बच्चे जो है उस माहौल, जिस माहौल से आ रहे हैं, क्योंकि बच्चों के पास तो जो घर से आते हैं तो मुख्तलिफ जबानें और लेकर आते हैं। जरूरी नहीं कि वो उर्दू पस मंजर से आते हों, बल्कि दीगर पस मंजर से भी आते होंगे। तो इसमें मल्टीलिंगुअल एस्पेक्ट को भी मद्देनजर रखा गया है। और जिसमें एक्सरसाइजेज में हमने उसमें ये लिखा है कि अगर आपको इस जबान में कोई लफ्ज है, जैसे बारिश लफ्ज है, तो बारिश लफ्ज को ये देखिए, शहनाई दूसरी जमात की नहीं है, उससे पहले शहनाई जो है वो पहली जमात के लिए थी। माफ कीजिएगा क्योंकि इंग्लिश का इसमें आ गया। अब इसमें ये तरतीब दी गई है, इसमें कौन कौन सी कहानियां, कौन कौन सी नस्बें इसमें पेश की गई हैं। जैसे बारिश और पराठे हैं, चांद में परियां रहती हैं, दो दोस्त हैं, आओ पढ़े हम, चलो स्कूल चलें, बाग की सैर, शहजादा सोहन, सर्दी की दोपहर, चांद का बच्चा और हमारी बिल्ली, मेरी बिल्ली। ये इस तरह की नज़में हैं जिसमें ज्यादा कुछ जो है वो हमने ऑथेंटिक शायरों की और नज़में वगैरह ली हैं, कुछ हमने अपने जो ग्रुप था हमारा एक्सपर्ट का, टेक्निकल डेवलपमेंट वाला, उन लोगों ने कहानियों को और उनको लिखा है। नेक्स्ट, ये दूसरी क्लास की तरतीब है। इसमें भी मुख्तलिफ कहानियां हैं, नज़में हैं, वैल्यू बेस्ड कहानियां हैं, जिसमें आओ पेड़ लगाएं मेरा भाई, और सबसे पहले दुआ है सारी दुनिया के मालिक। इसी तरह से हमारा वतन नज्म है, जो कि एनईपी में कहा जा रहा है कि इंडियन रोटेडनेस की बात कही जा रही है। यानी जो हमारी समाजी और सकाफती चीजें हैं वो भी अगर हम पढ़ाते हैं क्लास में, तो उसमें भी हमें जो मिसालें देनी चाहिए वो अपने हिंदुस्तानी परिवेश में जो है वो देनी चाहिए। नेक्स्ट, किताब की नुमाया खुसूसियात जिसके बारे में मैं बता चुकी हूँ। नेक्स्ट, इसमें भी मुख्तलिफ जो एक्टिविटीज दी हैं, सरगर्मियां दी हैं, तो उसमें भी खिलौने हैं, किट हैं, उनका इस्तेमाल किया गया है। ऐसे ही इसमें माहौल के तई बच्चों को हसास बनाने के लिए भी काफी मवाद और सरगर्मियां हैं। और इसके अलावा कौमी, समाजी, इंसानी अवतार को भी मलूज रखा गया है। इस बात का ख्याल रखा गया है कि बच्चे अपने आसपास के माहौल से सीखें और उन्हें रटने की जरूरत ना पड़े। तो इस तरह की एक्टिविटीज इसमें दी गई हैं। मशकों से पहले जो है वो लफ्ज शनासी भी है, हर्फ शनासी है। तो मशकों से पहले जेर तदरीस हरूफ हैं, फिर हरूफ से बनने वाले अल्फाज लिखने की मशक कराई गई है, ताकि जो हमारे बच्चे हैं बआसानी उर्दू सुनना, बोलना, पढ़ना और लिखना भी सीख सके। दोनों किताबों में टीचर्स के लिए यानी असातिज़ा के लिए हिदायत भी दी गई है, ताकि वो दौरान तदरीस क्लास में पढ़ाएं किसी लेसन को, क्योंकि अप्रोच बदली हुई है हमने। इस वजह से
वो दौरान तदरीस इनका ख्याल रखें। इसके अलावा असबाक और सफ़ात की तादाद भी हमने रखी है। दोनों किताबों में हमने 16-16 असबाक लिए हैं, जिसमें कुछ नज़में हैं, कुछ कहानियाँ हैं। इसी तरह से जो हमने मशक़ें बनाई हैं, एक्सरसाइजेज जो बनाई हैं, और इंतखाब में भी हमने इन चीज़ों का ध्यान रखा है कि बच्चों की जो तफ़हीमी और तख्लीकी सलाहियत यानी क्रिएटिविटी एंड अंडरस्टैंडिंग दोनों में इजाफा हो। और कसीर लिसानी रवैये हमने बताया, मल्टीलिंगुअल को लेकर भी हमने कुछ इसमें कहानियां दी हैं, जैसे पूरी रोटी है जो कि हिंदी से उर्दू में तर्जुमा है, उस कहानी को दिया है। इसी तरह से आउट है कहानी, वो भी हमने हिंदी से उर्दू तर्जुमा करके दी है। और जगह जगह हमने मशकों में भी कसीर लिसानियत को, जिसको हम उर्दू में कसीर लिसानियत बोलते हैं और अंग्रेजी में मल्टीलिंगुअलिज्म बोला जाता है। इसी तरह बच्चों को खुद करके सीखने के लिए, आमादा करने के लिए कुछ दिलचस्प मशकें जो है ना, आर्ट फॉर्म अपनी बच्चे उसमें तस्वीरें खुद भी बनाएं, रंग भी भरें। तो जैसा कि हम जानते हैं कि जबान को सीखने के लिए उसका माहौल खासा अहम होता है। और दूसरी चीज़ ये कि जब वो आर्ट से जब उसमें ड्राइंग बनाते हैं या कुछ करते हैं, तो उसी से बच्चे जो है वो बोलना भी सीखते हैं। अब जैसे तस्वीरें हैं, तस्वीरों के जरिए तस्वीरी कहानियां वो देख के बता सकते हैं अपने तौर से कि इसमें क्या क्या है। तो तस्वीरों के जरिए भी बच्चे जो है इसमें बोलेंगे। और इसके अलावा दूसरे मज़ामीन है हमारे, जैसे मैथमेटिक्स है जिसको रियाजी बोलते हैं, आर्ट है, माहौलियात वगैरह से भी रब्त पैदा किया गया है, इनको इंटेग्रेट किया गया है। और आसपास के माहौल में बच्चे ज़बान को बआसानी सीख सके। और जैसे कि मैंने बताया था अभी, जिसमें घर, खानदान, रहन सहन, माहौलियात, ग़िज़ा, सेहत, सफाई, वतन परस्ती, हिंदुस्तानी अनासिर, ये सब चीज़ें, इन सब चीज़ों से मुताबिक कराया गया है सबक के अंदर, किताब में। और इसके अलावा बच्चों की जो उम्र है, 6 से 8 साल तक की उम्र के बच्चे हैं इसमें, तो ऐसी कहानियां और नज़में शामिल की गई हैं जिन्हें तलबा बआसानी समझ सकें और पढ़ सकें। जिंदगी की बुनियादी महारतें हैं, जैसे आपस में मिलजुल कर काम करना, कामयाबी और नाकामी के वक्त जज्बात पर काबू रखना, जिसमें इसमें एक सबक है दूसरी क्लास में, खेल का मैदान, उसमें हमने लिया है। और उसमें बताने की कोशिश की है कि हार और जीत दोनों को जो है कबूल करना चाहिए, क्योंकि हारने वाला भी जीतने वाले से कम नहीं होता। इसी तरह मशकों से मैंने बताया था कि पहले हुरूफ से बनने वाले अल्फाज और उनको और हिदायत दी गई है। इसके अलावा कुछ एग्जाम्पल हैं किताब के जो हमने दिए हैं। नेक्स्ट, ये देखिए, इसमें बारिश और पराठे यानी जबान के साथ साथ माहौल को भी लिया गया है। बच्चे इसमें ये देख के बता देंगे कि ये जो है बारिश का मंजर है, क्योंकि बारिश आ रही है इसमें, इस तरह से। और इसमें खानदान का पस मंजर भी लिया गया है कि एक वालिद हैं यानी बच्चों के अबू हैं और दर चचा हैं, और ये दोनों बच्चे हैं। नेक्स्ट, नेक्स्ट, बारिश के मौसम में तरह तरह की जो पकवान बनाए जाते हैं, इसमें पराठे का जिक्र किया है। बारिश कैसे होती है, तो टीचर जो है बच्चों से बहुत सारे सवालात जो है इसमें कर सकती है, हालांकि हमने अपनी एक्टिविटीज में दिए हैं। नेक्स्ट, ये हिदायत है असातिज़ा के लिए, टीचर्स के लिए हिदायत दी गई है कि कैसे इस सबक को जब वो पढ़ाएंगे तो किन किन हिदायतों पर अमल करते हुए इस किताब को पढ़ाया जाएगा। नेक्स्ट, ये नेक्स्ट, ये मैं आपको एग्जांपल दिखाती जा रही हूँ। ये नज्म है। इसी तरह से दो दोस्त, ये भी कहानी है। आगे चलिए, आगे, ये भी। नेक्स्ट, ये तस्वीरें देखिए, ये चांद का बच्चा नज्म है। नेक्स्ट, इसमें भी हिदायतें दी गई हैं। ये मशकें हैं, देखिए, लफ्जों को लिखवाना, ये लफ्ज बच्चे जो है तस्वीरें देख के लिखेंगे। नेक्स्ट, जो एक्सरसाइजेज में ये है, एक्सरसाइजेज सारी दी गई हैं। नेक्स्ट, ये देखिए, ये जो है पहेलियां, पजल्स जो है ना, ये बनाए गए हैं बच्चों के लिए। नेक्स्ट, ये भी। नेक्स्ट लीजिए, ये सब मशकें हैं, लिखवाया है, पढ़वाया गया है सब। तो इस तरह से हमने इस पूरी किताब में जो है मशकों को जो है जोड़ा है। और ये मैं समझती हूँ कि किताबें आपके पास आएंगी, आप उनको देखेंगे तो पुरानी और नई किताब में फर्क को बखूबी समझ जाएंगे। और हम उम्मीद करते हैं ये आपको ये किताबें
आपने जो ये सुना वो किताबों में देखेंगे तो आपको पसंद आएगा। और उसके लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। धन्यवाद प्रोफेसर चमन आरा। अ, अब हमारे पास बहुत सारे सवाल आप लोगों के आ रहे हैं जिसके मैं जवाब देना चाहूंगी कि डू वी नीड टू इम्प्लीमेंट दीज बुक्स फ्रॉम ऑनगोइंग सेशन और नेक्स्ट इनकमिंग सेशन। तो मैं ये आपको बता दूं कि मैंने जैसा पहले कहा था, इस सेशन 2023 से ये कक्षा 1 और 2 किताब दोनों क्लास में लगेंगी। और कक्षा 1 में तो आपने लिखा है कि अप्रैल में जून चले गए, पोर्शन कैसे कवर होगा। तो आप जब इन किताबों को देखेंगे तो आप ये पाएंगे कि ये इसमें बहुत सारा बातचीत के लिए खेल आधारित है, और अगर आपने विद्या प्रवेश ऑलरेडी किया है तो एक एक्सटेंशन है। इसमें कंटेंट काफी कम है, लेकिन इसमें बहुत सारी गतिविधियां हैं, बहुत सारे खेल हैं, बहुत सारी बातचीत के अवसर हैं। तो ये किताब कंटेंट हैवी नहीं है, और जब आप करने लगेंगे तो आप पाएंगे, जब इन किताबों का इस्तेमाल करेंगे तो आप पाएंगे कि बच्चे बहुत आसानी से ये पूरा पोर्शन जो है खेल खेल में कवर कर ले रहे हैं और सीख रहे हैं। सो आई जस्ट वांट टू, for those who don't understand Hindi, I want to tell you that these textbooks need to be implemented from July 2023, from this session onwards. And it is not a content heavy approach. So lot of play, lot of activity, lot of discussion and oral language development has to happen, and children will learn languages as well as mathematics. And what about EVS as a separate period? So I want to inform you that NCERT never had EVS as a separate subject in grades 1 and 2. You saw in the textbooks of mathematics and languages, uh, the focus is on the language abilities, but the content is from the environment. For example, in Hindi, you saw that we had themes like Parivar, family, Jeev Jagat, Hamara Khan Pan, Tyohar और मेले, हरी भरी दुनिया. And in English, we had theme like My Family and Me, life around us, food, seasons, the whole world, going places, harmony. So all of this is the content from the EVS that children learn through the language textbooks or through the mathematics textbook. And another important thing is that these are all integrated. You see a lot of mathematics in Hindi as well as in English textbook, and lot of stories and rhymes and activities in the mathematics textbook. So if we stop bifurcating the subjects and just focus on the competencies, I think these books can be easily transacted from July onwards. Do these books have that aspect or only content is not very clear, but I hope through this example on theme-based approach, I have tried to answer that. So how will we complete the portion in remaining time? I can assure you that if you have a look at the books and if you use the same approach through which these books have been designed, by making it playful, activity-based, joyful, focusing on the activities and the fun element, that children are going to learn the competencies. And so another question is saying that will the syllabus get reduced for the particular session as 4 months of the session has passed? So for that, I have to tell you that especially in the foundational years for Balvatika and for grades 1 and 2, it is all play-based content. You can have lot of activities, and don't focus on the syllabus, focus on the competencies to be developed in children. Students have already purchased book for their new session. So in that case, I have to tell you that you can download the books from the NCERT website, which are free of cost, and can use them. And I invite any of my colleagues would want to say anything on the questions that we have received, then you are welcome. और एक और प्रश्न आपका है कि क्या उर्दू भी पढ़ानी है? तो उर्दू क्योंकि केंद्रीय विद्यालयों में नहीं पढ़ाई जाती, लेकिन बहुत सारे हमारे स्टेट है जहाँ पे उर्दू भी एज अ फर्स्ट लैंग्वेज पढ़ाई जाती है। तो ये जो उर्दू की किताबों का सेशन था, ये उन स्कूलों के लिए था जहाँ पे उर्दू भी एक ऑप्शन है या उर्दू भी एज फर्स्ट लैंग्वेज पढ़ाई जाती है। तो अगर आपके विद्यालय में नहीं है उर्दू तो आपको नहीं पढ़ाना।
और कोई सवाल? ये देखिए, ट्रेनिंग कौन करेगा? हम लोगों ने ऑलरेडी एक केंद्रीय विद्यालय के मास्टर ट्रेनर्स के लिए और एक सीबीएसई के मास्टर ट्रेनर्स के लिए हमने ट्रेनिंग कर दी है। आप हमारे पीएम ई विद्या चैनल में उसको देखते रहे। वहां पे हमारी फैकल्टी मेंबर्स और लंबे लंबे आधे घंटे के सेशन इनके बारे में, अप्रोच के बारे में, कंटेंट के बारे में आपसे खुलकर और विस्तार से चर्चा करेंगे। तो आप बने रहे हमारे साथ डिजिटल प्लेटफॉर्म में, और आप ये सारे जो है ये करेंगे। और लेकिन जो आपके केंद्रीय विद्यालय या सीबीएसई के माध्यम से मुझे लगता है आपकी और ट्रेनिंग कराई जाएगी टेक्स्ट बुक डेवलपमेंट के लिए। और अगर आपको कोई भी एनसीईआरटी से आपको कोई भी ट्रेनिंग या कोई भी मदद की दरकार हो तो हम आपके साथ हमेशा आपकी सेवा में हैं। बस इसके साथ ही इसके लिए हम लोग हैंडबुक भी लेकर आ रहे हैं, वो भी उनके लिए सहूलियत पैदा करेगी। और पाठ के साथ साथ तो कुछ निर्देश दिए ही गए हैं पढ़ने पढ़ाने के तौर तरीकों, तो अभी तो आपको भी ध्यान में रखना। जैसा कि डॉक्टर नीलकंठ कह रहे थे कि जो किताब है उसमें हर किताब में साथ साथ शिक्षक निर्देश या टीचर गाइडेंस दिया हुआ है। और हम बहुत ही जल्द टीचर हैंडबुक, आप ये जो किताबें हैं उनको ट्रांसलेट कैसे करें उसके बारे में टीचर हैंडबुक हम आप लोगों के साथ बहुत ही जल्दी साझा करेंगे। हम उसके डेवलपमेंट में हैं, के साथ काम कर रहे हैं। और आपकी कोई भी ज़रूरतें हैं आप हमको एनसीईआरटी डिपार्टमेंट ऑफ एलिमेंट्री, हेड डिपार्टमेंट ऑफ एलिमेंट्री एजुकेशन को या डायरेक्टर एनसीईआरटी को लिख सकते हैं। और इसके साथ ही हम इस चर्चा के अंत में आते हैं। और मैं सबसे पहले मेरे साथ जो मेरे कलीग्स हैं उनका धन्यवाद करना चाहती हूँ। प्रोफेसर चमन आरा, प्रोफेसर वर्दा, डॉक्टर नीलकंठ एंड निशा नेगी, आप सभी का धन्यवाद। और हमारे साथ जुड़ने के लिए और इन नई पाठ्य पुस्तकों के बारे में जानने के लिए जो आप लोग हमारे साथ जुड़े हैं, आप सभी का भी धन्यवाद। और मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि आप हमारे पीएम विद्या चैनल्स को देखते रहें, जिसमें आपको इन किताबों के बारे में और विस्तृत जानकारी मिलती रहेगी। धन्यवाद।